हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 8 सिविक सेंस एंड सिविक एक्टिविटीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ। सेफ्टी मेजर्स मींस हिफाजती इकदामात। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक हेलमेट है और एक सीट बेल्ट। तो आप समझ गए होंगे कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्री रीडिंग। अब प्री रीडिंग में ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ऑफन डू वी हेयर अबाउट फैटल रोड एक्सीडेंट्स, आई एक्सीडेंट्स इन विच पीपल डाई। हम अक्सर सड़क हादसा के बारे में कितनी बार सुनते हैं, खास तौर पे जिनमें लोग मरते हैं। Answer, we hear more than 3 to 4 fatal road accidents on every second day. Question 2, have you heard or read about fatal accident recently? क्या आपने किसी जानलेवा सड़क हादसे के बारे में सुना या पढ़ा है हाल ही में? Answer, yes. 2 days before, I saw on television a wedding bus dipped into the river. At least 15 people lost their lives. Question 3, how can people protect their lives and limbs while riding a bike or traveling in a car? लोग अपनी जान और आज़ा की हिफाजत कैसे कर सकते हैं बाइक चलाते वक्त या गाड़ी पर सफर के दौरान? Answer, people can protect their lives and limbs by following the traffic rules while riding a bike or traveling a car. Vocabulary. Before we start reading comprehension, we will discuss these word meanings and then we will start. Safety, the condition of being protected from danger, risk, or injury. Fatal means causing death or deadly. Two-wheelers, a vehicle with 2 wheels, usually a bicycle or motorbike. Disability, a physical or mental condition limits a person's movements, senses, or activities. Thrilling, causing excitement. Pillion rider, a person who travels in a seat or place behind the ride of a motorcycle, or seat behind the driver's seat on a motorcycle. Headgear, a covering or protective device for the head. Fine, an amount of money that has to be paid as a punishment for not obeying a rule or law. Injury, physical harm or wound. Traumatic, deeply disturbing or distressing. Untoward, unexpected or inappropriate. Cumbersome, complicated. Ease and comfort, a sense of relaxation or well-being. Windshield, the window at the front of the car, truck, etc. Skidding, to slide unintentionally on a surface. Invincible, too powerful to be defeated or overcome. Life and limb, life and all bodily faculties. Reading text, safety measures that can save your life. Hardly any day goes by when one does not hear of a fatal road accident. Several factors lead to these accidents, and some of these accidents one gets away with minor injuries and losses, while others can be fatal or they may lead to permanent disability. One of the key reasons for this is overspeeding. The other is the disregard for traffic rules. Both these factors are the responsibility of the traffic police, but two measures, if undertaken by people, can help save their life and protect them from disability. These two measures are wearing helmets and fastening seat belts. The former relates to motorbike riders and the latter to those traveling in various other types of vehicles. अब इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि शायद ही ऐसा दिन गुजरता है कि जिसमें हमने किसी मौतमार हादसे का ना सुना हो। कुछ हादसा मामूली नौइयत के होते हैं जिसमें हल्की चोट या नुकसान वगैरह होता है, और कुछ हादसा में मौत और हमेशा की माजूरी भी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा सबब तेज रफ्तार है और दूसरा कि ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना। ये दोनों काम ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी लें तो हम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत भी कर सकते हैं और माजूरी से भी बच सकते हैं।
और दो बातों पे अमल करके, एक हेलमेट पहन के और दूसरा सीट बेल्ट पहन के। पहली तदाबीर जो कि हेलमेट है वो मोटर बाइक वालों के लिए है और दूसरी तदाबीर सीट बेल्ट जो कि बाकी गाड़ियां चलाने वालों के लिए है। इससे पहले कि हम बॉक्स 1 स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि टोटल 6 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस 1 to 6, और इन सब बॉक्सेस में हेलमेट सेफ्टी के बारे में बताया गया है। Box 1. Riding a two-wheeler can be thrilling and fun, but it comes with a certain amount of risk, particularly when you are not wearing a helmet. A motorcycle helmet is a crucial safety accessory not only for the riders but also for pillion riders. However, people often tend to skip wearing these protective headgears, leading to dangerous accidents. You are much less likely to suffer a serious head injury in a crash when wearing a helmet than by not wearing it while riding a motorcycle. Moreover, you can be fined by the police if you do not wear a helmet while riding a motorbike. इससे पहले कि हम बॉक्स 1 स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं टोटल 6 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 to बॉक्स 6, और इन सब बॉक्सेस में हेलमेट के बारे में डिस्कस किया गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बॉक्स 1। दो पहियों वाली सवारी जैसा कि मोटर बाइक एक फन हो सकती है, लेकिन इसमें रिस्क है अगर हेलमेट ना पहना जाए। मोटरसाइकिल हेलमेट बहुत जरूरी है अपने लिए और दूसरे सवार के लिए भी। लोग अक्सर हेडगियर नहीं पहनते जो कि हादसा का शिकार हो जाते हैं। आप हल्की चोट का शिकार भी हो सकते हैं हादसा में अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होगा। इसके अलावा आपको पुलिस जुर्माना भी लगा सकती है अगर आप मोटर बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनेंगे। बॉक्स 2. देयर आर proportionately more accidents and subsequent injuries while riding a motorbike than while traveling in a car or other such vehicles. The size and structure of the motorcycle can make it vulnerable to losing balance, particularly when indulging in high speed and disregarding other traffic rules. Hence, the first thing that you need to understand when riding a motorbike is that wearing a helmet is crucial. Helmets minimize the risk of head injuries, the most common cause of death and disability in case of a crash. A helmet is an important safety gear that can save you from a life and limb threatening head injury. बॉक्स 2. सफर की निस्बत मोटर बाइक पे बहुत हादसा होते हैं। मोटर बाइक आपके काबू से बाहर भी हो सकती है अगर मोटर बाइक की तेज रफ्तार हो और ट्रैफिक के कानून की पासदारी ना की जाए। इसलिए पहली बात ये कि हेलमेट पहनना चाहिए ताकि हादसा में दिमागी चोट, मौत और माजूरी के इम्कान कम हो। हेलमेट आपकी जिंदगी की हिफाजत करता है, खास तौर पर दिमागी चोट से। बॉक्स 3. Head injuries are the most widespread cause of death in motorcycle accidents. Moreover, traumatic brain injury can result in permanent disability. In either case, your life and the lives of every member of your family will change forever. Death or serious injury can be prevented with the motorcycle helmet as it absorbs the impact of a crash or fall. Non-helmeted motorcyclists are 3 times more likely to sustain head injuries in a crash as compared to those wearing a firmly strapped helmet. बॉक्स 3. मोटरबाइक के हादसा में दिमागी चोट मौत का सबब बनती है। इसके अलावा दिमागी चोट हमेशा की माजूरी भी बन सकती है। मौत या तकलीफ दे चोट से बचा जा सकता है अगर हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए। हेलमेट ना पहनने वाला 3 गुना ज्यादा दिमागी चोट खाता है हादसे में बनिस्बत उसके कि जो हेलमेट पहनता है। बॉक्स 4. Helmet laws are constituted to save the lives of motorbike riders. Those who abide by the laws not only save their own lives but also protect their families from unnecessary harm and suffering. Following the laws of wearing helmets is challenging. You have probably heard that people do not wear helmets because their hairstyle gets messed up. Some say that helmets make them feel uncomfortable, that they cannot put up with the heat.
Others complain that helmets cause too much sweating and this irritates them. Some, however, have no specific reason for not wearing helmets except that they are sure that they will not get injured. Box 4 हेलमेट के लिए कानून बनाए गए हैं ताकि मोटर बाइक सवार की जिंदगी बचाई जा सके। जो कानून पे अमल करते हैं वो अपनी और अपने खानदान को भी नुकसान और मुश्किलात से बचाते हैं। अक्सर लोग हेलमेट इसीलिए नहीं पहनते हैं कि उनके बालों के स्टाइल बिखर जाते हैं या उनको गर्मी लगती है। कुछ का कहना है कि पसीना वगैरह आता है। उनको कोई खास सबब नहीं है हेलमेट पहनने का। बॉक्स 5 If you have ridden a motorbike, you know that this can be tough on the eyes. The sharp wind, strong sun rays, and dust particles can lead to severe discomfort and inconvenience, hindering your vision and resulting in untoward incidents. Moreover, extended exposure to such damaging factors can lead to major eye issues that can ultimately affect your health. Furthermore, winter brings in an additional set of challenges for bikers. The piercing cold wind not only causes discomfort, but also distracts the vision. Additionally, wearing a helmet while riding in winter can save you from the cold wind, thereby preventing your ride from becoming uncomfortable and risky. Box 5 मोटरबाइक चलाना आंखों के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तेज हवा, मट्टी के जरे या धूप आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है और आपकी आंखों की बीनाई पे असर करता है। इससे आपकी सेहत भी मुतासर होती है। तेज हवा आपके लिए ना सिर्फ मुश्किलात बल्कि आंखों की बीनाई पे भी असर करती है। हेलमेट पहनने से आप ठंडी हवा से भी बच सकते हैं और बहुत सी मुश्किलात से भी बच सकते हैं। Box 6 Considering all these factors, wearing a helmet is very beneficial for saving riders from fatal and disabling head injuries and adding to their comfort while riding. Not wearing a helmet means increasing the risk of fatality and disability due to head injury and harmful impact on your eyes. Wearing a helmet helps you in avoiding fines. More than that, it ensures maximum safety in case of a crash. Protect yourself, save your family from undue suffering. Wear a helmet the minute you start your motorbike ride. Box 6 सारे हिफाजती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए ये कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है ताकि हादसात में मौत, चोट और माजूरी से बचा जा सके। हेलमेट ना पहनने का मतलब मौत, चोट और माजूरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेलमेट पहनने से आप जुर्माने से भी बच जाते हैं। जैसे ही आप मोटरबाइक चलाना शुरू करें तो हेलमेट पहन लिया करें। तो ये थे बॉक्स 1 to 6 जिसमें हेलमेट पहनने की तलकीन की गई है। इससे पहले कि हम बॉक्स ए स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं टोटल 6 बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए टू बॉक्स एफ, और इन सब बॉक्सेस में सीट बेल्ट की सेफ्टी के बारे में बताया गया है। बॉक्स ई An important practice that can save your life. Don't drive anywhere until your seat belt is fastened. Choosing to wear a seat belt is as simple as choosing between life and death. Which one would you prefer? Let's look at the choices. If you're not wearing your seat belt, you can easily change seats and quickly slide out of the car. That seems to make life easy for you, but you are also more likely to die or suffer serious injuries. If you are wearing a seat belt, you have to stay in your seat. That may be somewhat cumbersome, but you are much more likely to walk away unharmed from a car accident. Choosing between ease and comfort and severe hardships and pain, is that a tough choice? अब मैं आपको बॉक्स ए स्टार्ट करने से पहले बता दूं टोटल 6 बॉक्सेस हैं ए टू एफ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बॉक्स ए। आप गाड़ी ना चलाएं जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनते। सीट बेल्ट पहनने का फैसला करना इतना ही आसान है जितना जिंदगी और मौत का। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आप आसानी से सीट चेंज कर सकते हैं और जल्दी से गाड़ी से गिर भी सकते हैं। इससे जिंदगी आसान तो हो सकती है मगर
मौत और चोट के भी बहुत इम्कानात होते हैं। सीट बेल्ट पहनने से बहुत सी मुश्किलात होती हैं, मगर इसके पहनने से आप हादसा से बच सकते हैं। बॉक्स बी, think about this. When you are driving in a car, you may be going down the road at considerable speed. If for some reason somebody ahead of you applies brakes suddenly, it is very likely that the driver of your car will not have time to stop. What will happen? The car that you are traveling in will crash into the vehicle in front. While the brakes or crash can make the car stop suddenly, the same does not apply to your body. The car brakes will stop the car, but your body is still traveling at the speed of your car. What can control your body's speed and stop it from going through the windshield? The thing that can save you from serious injury or even death by applying brakes to your body is your seat belt. बॉक्स बी, सोचें कि अगर आप गाड़ी में सड़क पर तेज रफ्तार से जा रहे हैं और आपके आगे वाली गाड़ी में ड्राइवर ने किसी भी वजह से अचानक ब्रेक लगा दी, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपकी गाड़ी को रोकने में वक्त मिले। फिर क्या होगा? तो आपकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाएगी। ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, मगर वही चीज आपकी जिंदगी पर अप्लाई नहीं होती। तो जो चीज आपको तकलीफ या मौत से बचा सकती है वो है सीट बेल्ट। बॉक्स सी, some people think that seat belts are not necessary. They think that seat belts cramp their lifestyle or seat belts are uncomfortable. The question here is, what is more uncomfortable? Wearing a seat belt or flying through a car windshield? Being safely anchored in your seat or skidding across the road and getting seriously injured or breaking a limb or two or even dying? Just think about it. Wearing a seat belt requires little effort, but it protects you from a lot of harm, can even save you from death. Consider what you and your family will suffer in case you are badly injured or, God forbid, you die just because you did not fasten your seatbelt. Most people are likely to agree that fastening your seatbelt is definitely a better and safer option. Box C. कुछ लोग कहते हैं कि सीट बेल्ट पहनना जरूरी नहीं है। वो समझते हैं कि इससे जिंदगी का लाइफ स्टाइल खराब हो जाता है या सीट बेल्ट से वो गैर आरामदा महसूस करते हैं। मगर सवाल ये है कि गैर आरामदा क्या है? सीट बेल्ट पहनना या गाड़ी के शीशे से छलांग लगाना? सीट बेल्ट पहनने में थोड़ी मेहनत चाहिए, मगर ये आपको बहुत सी मुश्किलात से बचाती है, हत्ता कि मौत से भी। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि सीट बेल्ट पहनना बेहतर और अच्छा ऑप्शन है। बॉक्स डी, not wearing seat belts also has serious financial implications. The highest bill is likely to be your medical bill, both immediate medical expenses and long-term expenses, depending on the type and seriousness of your injuries. Also, let us not forget the financial loss due to limitations that your injuries may impose on your earning ability, both long-term and short-term. Moreover, even if you are lucky and do not meet any accident, you may still end up paying a fine if you are traveling in a car and do not have a seat belt on. The police can fine the driver, particularly on a motorway, if you or your co-traveler are not wearing the seat belt. Box D. सीट बेल्ट ना पहनने से मालियाती मुश्किलात भी होती हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल बिल की, जो कि वक्ती और तवील मुद्दत भी हो सकती है। इसका दारोमदार हादसे पर होता है। खुशकिस्मती से अगर आप हादसे से बच भी जाएं, तो दूसरी मुश्किल ये भी है कि आपको पुलिस को जुर्माना देना पड़ जाएगा अगर आप या आपके साथ गाड़ी में सवार ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। बॉक्स ई, wearing a seat belt does not make you invincible. You can still get hurt or killed while wearing a seat belt. But wearing seat belts minimizes your chances of getting killed or seriously injured. It has proven to be safer than driving without them. You are much less likely to be killed in a car wreck if you are wearing a seat belt. You are much less likely to get seriously injured if you are wearing one.
you are likely to have lesser financial burden. So why not take the safer route? Why not go the way that has been proven to result in lesser injuries and fewer deaths? Box E. सीट बेल्ट पहनना आपको नाकाबिले तस्कीर नहीं बनाता। सीट बेल्ट पहनने के बावजूद भी आपको चोट लग सकती है, लेकिन सीट बेल्ट पहनने से हादसा, चोट वगैरह के इम्कानात कम हो जाते हैं। बॉक्स एफ, सीट बेल्ट सेव लाइव्स एंड दैट इज अ फैक्ट। The click of a seat belt is an insurance that safeguards your safety and survival. You can lose your life and limb or waste your time and money, or both, by not wearing your seat belt. Every time that you get into a car, you can make a choice. Do you want to be safe and sound by wearing your seat belt? Or do you want to be a bit more comfortable by not wearing your seat belt? The choice between living safely or exposing yourself to harm is definitely yours. बॉक्स एफ, सीट बेल्ट पहनने से जिंदगी बच जाती है, ये हकीकत है। सीट बेल्ट पहनना आपकी जिंदगी और हिफाजत की जमानत है। सीट बेल्ट ना पहनने से आप अपनी जिंदगी, वक्त और पैसे का जाया करते हैं। जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं, आप ये फैसला कर सकते हैं, आप सेहतमंद और महफूज रहना चाहते हैं सीट बेल्ट पहन के, या थोड़ा बहुत आरामदायक सीट बेल्ट ना पहनकर। फैसला आपको करना है कि आपको सेहतमंद और महफूज रहना है या अपने लिए नुकसान, मुश्किलात पैदा करना है। तो ये थी आज की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 8.1 सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ, जो कि हेलमेट एंड सीट बेल्ट के बारे में थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट 8.1 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1 to 8 डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।